Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel TrustLogics Tutorial. TrustLogics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our TrustLogics website and mobile. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, as per Knight Frank in its prime global cities index Q1 2021 report, what is New Delhi rank among global cities in terms of prime residential properties? Okay, प्राइम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2021 रिपोर्ट में न्यू दिल्ली की क्या रैंक रही है अमंग ऑल द ग्लोबल सिटीज़. सो हेयर आर द ऑप्शंस 27, 29, 31st and 32nd. So here the correct answer is 32nd. New Delhi's rank declined to 32nd among global cities in terms of prime residential properties. Okay. प्राइम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में न्यू दिल्ली की रैंक 32nd हो गई है ड्रॉप होकर के. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना अमिड अ राइज इन केसेस इन द स्टेट. स्टेट में केसेस बढ़ने से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लॉन्च किया है. सो हेयर आर द ऑप्शंस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हरियाणा. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश. द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना अमिड अ राइज इन द केसेस इन द स्टेट. स्टेट में केसेस बढ़ने की वजह से मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च कर रहे हैं मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना. ओके, so now goes the next question and here the next question is, Niti Aayog in partnership with which company released a report titled Connected Commerce Creating a Roadmap for a Digitally Inclusive Bharat. डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए एक रोड मैप बना रहे, कनेक्टेड कॉमर्स रोड मैप बनाया जा रहा है. तो ये कौन सी कंपनी बना रही है. सो हेयर आर द ऑप्शंस गूगल, मास्टर कार्ड, वीज़ा, माइक्रोसॉफ्ट. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज Mastercard. Niti Aayog and Mastercard releases a report titled Connected Commerce Creating a Roadmap for a Digitally Inclusive Bharat. Okay, डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए एक रोड मैप बनाया जा रहा है. नीति आयोग और मास्टरकार्ड ने ये रिलीज किया रिपोर्ट. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच यूटी बिकम हर घर जल यूटी बाय इंश्योरिंग एवरी रूरल होम गेट्स अ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन. हर घर में एक नल हो, तो इसके लिए हर घर जल वाला कौन से स्टेट में किया गया है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में किया गया है. सो हेयर आर द ऑप्शंस लक्षद्वीप, पुदुचेरी, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़. ओके, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज पुदुचेरी. पुदुचेरी हैज़ बिकम द हर घर जल यूनियन टेरिटरी बाय इंश्योरिंग दैट एवरी रूरल होम गेट्स अ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन. ओके, पुदुचेरी ने बनाया है हर घर जल यूनियन टेरिटरी, जिससे कि हर घर में एक टैप कनेक्शन हो. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड वर्चुअली इन विच कंट्री. G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग किस कंट्री में होने वाली है. सो हेयर आर द ऑप्शंस इटाली, इजराइल, यूके एंड फ्रांस. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज इटाली. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल participated virtually in G20 tourism ministers meeting held in Italy. Okay, so now goes the next question and here the question number 6 is, which countries were invited by the Council of European Union to participate in the bloc's permanent structured cooperation defense initiative. Okay, so here the options are Canada, USA, Norway, all of the above. So here the correct answer is all of the above. The Council of European Union approved inviting the United States, Canada and Norway to participate in the bloc's permanent structured cooperation PESCO defense initiative. PESCO defense initiative में Council of European Union ने United States, Canada और Norway तीनों को ही invite किया है. Okay, so now goes the next question and here the next question is, recently which company got authorization for
RBI for issuance and operation of semi-closed prepaid payment instruments with perpetual validity. हाल ही में किस कंपनी को मिला है RBI के साथ मिलकर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करने का? ओके, इशू मिला है. सो हेयर आर द ऑप्शंस: पेटीएम, बजाज फिनांस, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड मोबीक्विक. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज Bajaj Finance. Okay, the RBI granted an authorization to Bajaj Finance for issuance and operation of semi-closed prepaid payment instruments with perpetual validity. Okay, RBI ने grant किया है Bajaj Finance insurance को. Okay, so now goes the next question, and here the next question is: which company launched सावधान रहे सेफ रहे अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क पे किस कंपनी ने सावधान रहे सेफ रहे वाला लॉन्च किया? सो हियर आर द ऑप्शंस: डीसीबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई कैपिटल, बजाज फिनसर्व. So here the correct answer is Bajaj Finserv. Bajaj Finserv launched his सावधान रहे सेफ रहे across digital and social media platforms to educate customers and public at large on financial fraud risk and how to stay protected. Okay, सावधान रहे सेफ रहे ये किसने स्टार्ट किया? बजाज फिनसर्व ने सारे डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोग फिनेंशियल फ्रॉड रिस्क से कैसे बच सकते हैं उसके लिए और कस्टमर्स को एजुकेट करने के लिए. So now next question: as per the recent order by Ministry of Labour's, how much % can EPFO can invest in alternate investment funds to support infra push? infra push को सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है? सो हेयर द ऑप्शंस: 6%, 4.5%, 4% and 5%. So here the correct answer is 5%. The Labour Ministry has notified the changes in the investment pattern of Employees Provident Fund Organization, paving way for the retirement fund body to invest up to 5% of its investable surplus in alternative investment fund AIFs that supports infrastructure, micro, small and medium enterprises, venture capital funds and social venture capital funds. The new investment pattern will be effective from March 15, 2021. Okay, तो कितना किया है? 5%. और ये कब से स्टार्ट होगा? March 15, 2021 से. ओके, हो गया स्टार्ट. Okay, so now next question, and here the next question is: recently which Parsi player was selected after 28 years in Indian cricket team for World Test Championship 2021? World Test Championship 2021 में किस पारसी प्लेयर को 28 ईयर्स के बाद सेलेक्ट किया गया? सो है द ऑप्शंस: अरजान नगवाशवाला, फरूह इंजीनियर, क्रिस देलावर, बमान ईरानी. सो है द करेक्ट आंसर इज अरजान नगवाशवाला. Arzan Nagwashwala was not even born when Farooq Engineer, the last Parsi cricketer to have featured in the India men's team, played his final test for the country in 1975. Okay, 1975 में इन्होंने अपनी फाइनल टेस्ट खेली थी. ओके, सो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our TrustLogics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.